ड्रीम होता है वहां के लड़के लड़कियों का, उस बनने के बावजूद अगर आप रेडिकलाइज होकर अपने ही देशवासियों को मारने के लिए और अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की रेडिकलाइजेशन हो रही है और इस फ्रंट पे हम क्या काम कर रहे हैं। Investigators have identified Maulvi Irfan Wagha, also known as Imam Irfan, from Shopian in South Kashmir, as the mastermind who blended his dual identity, that of a preacher and healthcare worker, to influence and radicalize the educated youth. The accusation against him is completely baseless. He had been there for 7 years, offering prayers, conducting religious classes, and teaching children at the religious center. He would come only occasionally. We had no idea about the allegations against him, but we don't believe them. He is a good person. We don't know anything else. According to the ongoing investigation, Maulvi used his access at GMC Srinagar and his sermons in Naugam's local mosques to identify and influence those he saw as easy targets, pushing them towards radicalization. He used social media to radicalize highly qualified professionals. During the questioning, Irfan admitted to the police that he had radicalized Dr. Muzammil Shakil, who is the key accused of Faridabad Arms Hall. According to the officials, Imam Irfan allegedly built and expanded a white-collar terror network with the help of Pak-based Jaish handler Umar bin Khattab, alias Harjula. The police found improvised explosive devices materials, electronic gadgets during raid at his residence, providing leads to a wider nexus. The investigation continues, with agencies coordinating across Delhi, Haryana, and Jammu and Kashmir to uncover how this white-collar network expanded under the guise of faith and medicine. From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. And much more in this edition of This Is Exclusive, but up first, let me take you through the headlines we are tracking at this hour. Thousands of Imran Khan supporters storm Pakistan's Adiala Jail, attempt to break into Adiala Jail and find out the truth about Imran Khan. Imran's sisters, meanwhile, asked to meet jailed ex-Pakistan Prime Minister amid death rumours. Imran's sister speaks to Republic TV, says that she will stay outside the jail till information on her brother is provided. Sri Lankan LTT infiltrated Tamil Nadu voter rolls, held Indian passport, Aadhaar, PAN and active voter ID card while funneling funds to terror cartels.
Well, there's been massive speculation about the condition of former Pakistan Prime Minister Imran Khan. Where is Imran Khan right now? In fact, family members of Imran Khan have now alleged that for the last 2 weeks, they've got no communication from the jail authorities. In fact, Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister, who is a PTI leader, Sohail Afridi, has now directly levelled allegations against the Shehbaz Sharif government, saying that the jail authorities are being controlled by the army. Afghan media, in fact, has gone a step further, speculating that Imran Khan is dead. There is no official word really coming in from the Pakistani government, or for that matter, even Imran Khan's family members. But this is what has happened over the last 24 hours. It turns out that Pakistan's PTI supporters are outside the Adiala Jail. And not just that, Imran Khan's 3 sisters have been camping outside Adiala Jail. So much so that Shehbaz Sharif's government was basically forced to remove Imran Khan's sisters from outside Adiala Jail. There is a complaint that has been filed by Alima Khan saying that her sister, who's 71-year-old and who's spoken to Republic TV, was dragged. She was beaten outside the Adiala Jail. And now she has demanded that there should be an impartial probe. Over the next couple of minutes, we're going to take you through every details emerging from Pakistan, from Rawalpindi. In fact, there are reports that we are getting in. The first report that we're going to play out right now is Imran Khan's sister, who has spoken to Republic TV and has clearly mentioned that she's going nowhere until and unless Shehbaz Sharif's government makes it clear that her brother is alive. Take a look at this interview. कुछ नहीं कहेंगे, हम सब यहाँ खड़े हैं, जब तक मुलाकात नहीं होगी खड़े हैं, चाहे कल खर तक होए, परसों होए, अगले मंगल तक होए, हम यही बैठे हैं। हमने देखा कि पिछले मंगल को जो है नाखुशगवार वाक़या भी यहाँ पेश आया था, उसको कैसे देखती हैं? आज पुलिस ने इस तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं की अब तक? नहीं, पुलिस को एक ही दफा इतनी कार्रवाई कर सकते हैं ना। अभी पुलिस कुछ नहीं कह रही हमें, क्योंकि अलामा नासिर बैठे हैं, और अलामा नासिर आपको पता है कि बहुत ही बाइज़्ज़त इंसान है, बहुत बड़े इंसान है, अलामा है, दीन के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, तो इसलिए हमें कुछ नहीं अभी कह रहे। अब ये प्रोटेस्ट आप जारी रखेंगी जब तक इमरान खान से मुलाकात? जी, जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएंगे हम यहीं बैठे हैं। और अगर इन्होंने कुछ ज्यादा किया, आज तो आपको पता है मेरे साथ बहुत सारे मेरे मुहाफिज आए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल वो छोड़ेंगे। अगर किसी ने आज कुछ किया तो कोई नहीं बचेगा। लास्ट खान साहब से मुलाकात आपकी कब हुई थी और इमरान साहब ने क्या मैसेज दिया? इमरान खान ने तो यही कहा था पुरअमन रहो, लेकिन इमरान खान को नहीं पता कि अमन खत्म हो चुका है, अब पुरअमन रहने का वक्त खत्म हो गया है। तो लेकिन इमरान खान को नहीं पता बाहर क्या हो रहा है ना। तो देखिए, इंशाअल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि जो ये जालिम है ये बचेगा। अब इनका आखिरी वक्त है। और मैंने कोई नजूमियों को भी सुना, वो कह रहे थे कि ये जो तारीखें हैं ना 29 और 7, इसी में इनका काम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। लास्ट में कोई वर्कर्स को जो ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई मैसेज देना चाहे? ओवरसीज को तो यही कहेंगे कि उनकी वो बहुत ताकत है पीटीआई की, वो तो हैं ही हमारे साथ। और बाकी जो वर्कर्स हैं वो बेचारे तो देखें सब हमारे साथ हैं। बहुत, मैं कहती हूँ इमरान खान ने बहुत अच्छी पार्टी बनाई है, जिसमें जो वर्कर है वो बहुत ट्रेंड और मतलब सही वर्कर है। वो बिरयानी खाने नहीं आता, वो खाना खाने नहीं आते, वो सही इमरान खान की ट्रेंड ताकत एक आर्मी है, फौज है। ये इमरान खान की जो नजरिए पे है ना, वो एक फौज है इमरान खान की, जो इनको हमेशा तकलीफ देगी। आखिर में ये बता दें कि हमने दोपहर को देखा कि मुल्क के तूलो अर्ज से जो है वर्कर्स आपके साथ, अलीमा खान साहिबा के साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए कोई पीटीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल कॉल नहीं थी, किसी की तरफ से कोई कॉल नहीं थी कि यहाँ आना ये नहीं आना, कोई ऐसा मैसेज भी नहीं था। हमने देखा कि कनाडा से भी लोग जो आए थे पीटीआई के, वो भी ज़ाहिर यकजहती कि यहाँ पहुँचे, कोई जगह जगह नाके थे, वो यहाँ नहीं पहुँच सके, लेकिन फिर भी वो कोई घूम के आया, कोई रक्शे में बैठ के आया, कोई सुजुकी में बैठ कर आया। उनके इस जज्बे को कैसा देखते हैं? मैं कहती हूँ पंजाब पुलिस की हम तारीफ करते हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने इतना मारा, ये शाहिद खटक साहब खड़े, इनको भी, और मीना से भी, और इन्होंने मुझे भी जब इतना किया तो इन्होंने लोगों को खुद ही जमा कर लिया। तो पंजाब पुलिस का शुक्रिया करते हैं इसलिए। Well, in fact, we've also spoken to PTI's General Secretary, who says that it is because this entire jail authorities
are now being controlled by the army. Not just that, he says that the world is watching what's really happening inside Pakistan, and the fact that the control is no longer with Shehbaz Sharif, but it is in fact with the Pakistani army. A direct allegation coming in from the PTI General Secretary after the Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa, who made a similar accusation. But this is on Indian TV camera. This is what he had to say. सलमान साहब, आप सुबह से यहाँ मौजूद हैं, मुलाकातें नहीं हो रही, ना आपकी होने दे रहे हैं, ना फैमिली की होने दे रहे हैं, क्या फरमाएंगे? देखिए, ये लाकानूनियत का एक दौर है, एक तारीख दौर है ये पाकिस्तान की तारीख का, और इस दौर से हमें बहरहाल गुजरना है। इस वक्त तो हम बहनों के साथ बतौर भाई खड़े हैं, हम उसूल पे खड़े हैं, हम कानून के लिए खड़े हैं, हम शराफत के लिए खड़े हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ बतौर भाई खड़े हैं बहनों के साथ। तो जब तक यहाँ बहनें खड़ी हैं, वो अपने भाई से मिलने का हक रखती हैं, कानूनी हक रखती हैं। ये शराफत का तकाजा है कि उनको उनके भाई से मिलने दिया जाए। अब तकरीबन एक माह होने को आया है, 3 हफ्ते होने को आए हैं कि किसी बहन की मुलाकात नहीं हुई अपने भाई से, किसी वकील की मुलाकात नहीं हुई। खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। ये इंतहाई तशवीश की बात है। तो हम खड़े हैं, अपना एहतजाज हम रिकॉर्ड करा रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम हमें देख रही है कि हम हक की आवाज बुलंद किए खड़े हैं, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। इस तारीख दौर को हमने बहरहाल झीलना है। इस वक्त मुल्क में ना मईशत चल रही है, ना कानून चल रहा है, अदलिया सरनिगू है, मईशत बिल्कुल जामिद है। करप्शन की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक IMF की आपके सामने आ चुकी है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है कि ये कहाँ जा रहा है। ये 25 करोड़ का मुल्क किस तरह जबर के जरिए, झूठ के जरिए, फरेब के जरिए एक पूरी कौम को सरनिगू किया जा रहा है, एक पूरी कौम के जज्बे को, पूरी कौम की आवाज को सल्ब किया जा रहा है। तो ये एक मसनूई सूरत हाल है, ये कायम नहीं रह सकती। कोई पाकिस्तान का खैर खा, कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस सूरत हाल की हिमायत नहीं कर सकता। तो हम इसलिए खड़े हैं कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत है। हम समझते हैं कि जमहूरियत के बगैर, शराफत के बगैर, आइन और कानून के बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वो बलोचिस्तान के हुकूक हों, खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक हो, ड्रोन हमलों के खिलाफ मज़ाहमत हो, गुमशुदगान के लिए जद्दोजहद हो, वो सिंध के हारी का पानी हो, वो पंजाबियों का वोट हो, वो गिलगित बल्तिस्तान हो, वो आज़ाद कश्मीर हो। हर जगह इस वक्त पाकिस्तान की आवाम पर यलगार है और कोई इस यलगार का जवाब नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि यलगार जरूरी है माशी तरक्की के लिए, तो वो बेवकूफ़ है। माशी तरक्की नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की आवाम और रियासत के दरमियान यगानगत ना हो। ये एक खलीज इन्होंने पैदा कर दी है अवाम और रियासत के दरमियान, जो दोनों के लिए, अवाम के लिए भी मोहलिक है और रियासत के लिए भी मोहलिक है। सलमान साहब, ये बता दें कि प्रोटेस्ट जो है ये कब तक आप लोग जारी रखेंगे? अलीमा खान साहब तो कहते हैं अगर आज मुलाकात नहीं तो वो जारी रखेंगे। देखिए, ये उनकी सवाबदीद है। मैंने अर्ज किया, हम भाई का रोल इस वक्त अदा कर रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, हम अपनी बहनों को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। जब तक वो यहाँ बैठी हैं हम उनके साथ खड़े हैं। सर, आईनी अदालतों का क्या हो गया? आप लोग भी मजबूरी से पेश तो हो रहे हैं, तो क्या आईनी अदालतें कोई इंसाफ देंगी? कोई वक्त बताएगा, हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम समझते हैं आईनी अदालत का कयाम जो है पाकिस्तान के आइन पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट को 2 लख्त कर दिया गया है, मंजूर नजर जजों को इस आईनी अदालत में बिठाया गया है। तो हम देखेंगे। देखिए, जब एक सानिया हो जाता है तो आपको साने से निमटना होता है। क्या हम बॉयकॉट करेंगे या हम कड़वा घूंट पीकर बहरहाल इन अदालतों के सामने पेश होंगे ताकि हमारी आवाज जो है बहरहाल वो गूंजती रहे, इमरान खान की आवाज गूंजती रहे। वो प्रेस के जरिए हो, वो आप लोगों के जरिए हो, सोशल मीडिया के जरिए हो, हम हर ऐवान को इस्तेमाल करेंगे जहां हम आवाज उठा सकते हैं। Well, in fact, the protest started a little after midnight on 26th of November when you've had thousands of PTI supporters outside Adiala Jail. Not just that, Imran Khan's sisters were also present there. Our cameras were present there, getting us a sense of what's really developing right now. Is it back to what we had witnessed in 2023, or attempts are going to be made by Asim Munir to muzzle the voice of PTI supporters? Take a look at this report. अडियाला जेल के बाहर काफी जोशो खरोश है। ये आप देख सकते हैं मनाज़िर। जेल का टाटला टूट गया। इमरान खान साहब के हवाले में हक में नारेबाजी हो रही है और बड़ी तादाद में इस वक्त धरने में शुरका मौजूद हैं। बैरिस्टर गोल्डी खान, अलीमा खान साहबा और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है वो सारे
इस वक्त इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। यह आप देख सकते हैं मनाज़र सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs MPs। ये आप इस वक्त अडियाला जेल के मनाज़र आपको हम दिखा रहे हैं। अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट इस वक्त जारी है। इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है इमरान खान साहब की बहनों के हमरा इस वक्त यहाँ मौजूद है। अडियाला जेल के बाहर के दागा नाका है, वहाँ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ ये प्रोटेस्ट जारी है और इसमें इमरान खान साहब क्या कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। अडियाला जेल के बाहर के ताज़ा तरीन मनाज़र आप इस वक्त देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ मौजूद है। अलीमा खान, बैरिस्टर गोलनी खान, तमाम बड़ी तादाद इस वक्त अडियाला जेल के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। Well, after Alima Khan, now Imran Khan's eldest sister Noreen Niazi has filed a formal complaint with Punjab Inspector General of Police, referring to the event as a brutal assault on peaceful PTI protesters. In fact, in the earlier complaint that was filed by Alima Khan, she has basically referred to the fact that her sister, who's 71 years old, was dragged outside the Adiala Jail, so much so she was pulled by her hair and she was taken into custody. Alima Khan was taken into preventive custody earlier today. In fact, she has now been granted bail by a court in Pakistan. Joining me is my colleague Kaswar from Pakistan. Kaswar, thank you very much for joining us on this broadcast. First, I want to ask you that what's the situation right now? Because multiple reports essentially suggesting that Imran Khan is no more, if you simply go by the reports coming in from Afghanistan. But it seems that that could also be with some sort of an agenda here. But let me ask you, has there been any official word really coming in from Shehbaz Sharif's government as to what's the condition of a former Pakistani Prime Minister? Well, Shamal, let me tell you that these are the fake reports and there is no response from the Pakistani side because nobody, either from Imran Khan's party or either from Imran Khan's family have contacted the Pakistani government on this. And according to my sources, he is very much there in Adiala Jail and there is no credential to these reports, first thing. Secondly, let me tell you, this protest was planned and happened on 24th of November outside Adiala Jail and roughly 200 people were there. And Imran Khan's sister was taken into custody on court order because despite a number of summons by the anti-terrorist court, she was not appearing before the court. And the fact is that the police party, on directions of Pakistani court, went outside Adiala Jail and they took her into custody and took the court as well. And after a few hours, she was granted bail and she was released after signing surety bond. This is the reality which I can tell you at the moment from Islamabad. So right now, there's no protest going on outside Adiala Jail. But yes, according to my information, the Pakistan Tehreek-e-Insaf has called for a protest tomorrow. It will be a countrywide protest, but nobody knows how many people could attend these protests as well. Secondly, what I can tell you at the moment is Imran Khan is languishing in jail on the orders of the Pakistani court. She's languishing in jail not on the orders of Pakistani government or the establishment, first thing. And he is there along with his wife after he was sentenced by the Pakistani courts. And now only a few leaders and the family members of Imran Khan's party and Imran Khan's family have the liberty to meet him in the jail. And this is purely up to the Pakistani court who will meet him in the jail or not. Because there is a bar on such thing. Kaswar, nobody from PTI, not Kaswar, anyone, I want to take another question with you because there is something that does not meet the eye right now. In fact, questions are essentially being raised as to why for over 2 weeks
no one is being allowed. I'm going to take that question with Kasper in a short while from now. But before that, listen into another senior PTI leader who spoke hours after there was a crackdown that took place and they had once again reassembled outside Adiala Jail. And this is an open threat given to Shehbaz Sharif's government by a senior PTI leader. खान साहिब और उनकी फैमिली का है और एक इम्तिहान हमारी पूरी कौम का, हम सब का है। वो इम्तिहान जेल में देकर डटे हुए हैं, नहीं झुक रहे हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं खौफजदा है। एक इम्तिहान हमारा है। आप मुझे बतलाएं, अगर हम अहद कर ले पाकिस्तान के अवाम, एक दिन हम 25 करोड़ से ज्यादा हैं, एक दिन अहद कर लें, हमने चंद घंटों के लिए घरों से बाहर निकलना है। आप मुझे बतलाएं, इन गासिबों, जालिमों और कातिल हुक्मरानों को पाकिस्तान में छुपने की जगह मिलेगी? नहीं छुपेगी। ना इन्हें गारों में जगह मिलेगी, ना पहाड़ों में मिलेगी, इन्हें कई जगह नहीं मिलेगी। ये बहरहाल लिहाजा हमें तैयार होना है। पाकिस्तान। Well, Kasper, you're saying that it is because of the court. Then could you explain why the family members are not being allowed to meet? It's been over 2 weeks is what the family members are alleging. Is there any word really coming out from the jail authorities as to what is stopping them? Has the court stopped Imran Khan's family members to meet him? Well, Shaman, I don't know what really is happening on this ground as well. But let me tell you, this is purely up to the court. Only those people whose names are given by the family, either from the family or either from Pakistan Tehreek-e-Insaf. Actually, what is going on is that every worker, every leader wants to get into the Adiala jail to meet him. But only a few have been allowed by the Pakistani courts to meet Imran Khan. Fasting. That is the reality. And now, this is not up to the Adiala jail authorities to allow whether who wants to meet or not. This is purely up to the court. Whenever court decides, these leaders, these members of the Pakistan's PTIs, and also these are the members from the family of Imran Khan, they are allowed to meet. Whenever the court allows, they are allowed to meet Imran Khan. And let me tell you that there have been a few number of leaders and the family members, they have been continuously meeting Imran Khan in the jail. And now, according to what I have got through my sources, that whenever there is an order from the Pakistani courts and there are a few names that are given to the courts allow, then definitely the jail authorities are mean to take the orders from the court. So this is very simple. Whenever court decides, the people can meet either from the Imran Khan, it remains to be seen. Kasper, it remains to be seen whether at all family members will be allowed and how long can they really be stopped and what is the reason really behind it. Well, that's all that we could pack in this edition of This is Exclusive. Coming up, trending with my colleague Rakshita. Co-powered by Century Ply Club Prime. रहो बेफिक्र। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा, धोखा नहीं देगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा, सेफ रहेगा, सिक्योर्ड, मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। मुस्कुराए लड़खड़ाए जिंदगी, चाहे जो भी हो। सर, पेशेंट के लिए कौन सा रूम प्रेफर करेंगे आप? जिंदगी भर के प्यार का कोई रेट कार्ड नहीं होता। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, विद यू लाइक फैमिली, विद यू ऑलवेज। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का
साथ जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये ही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। China and Japan are clashing verbally over Taiwan. Tensions between China and Japan have risen over Taiwan's security. Japan has signaled it may intervene in a potential conflict, viewing it as a threat to its own stability. China condemned this as meddling, issuing strong warnings and summoning diplomats. This conflict started when Japan's newly appointed Prime Minister, Sanae Takaichi, issued a direct warning to China during a session of the country's parliament. She stated that a conflict in the Taiwan Strait could represent a survival-threatening situation for Japan, implying that Tokyo might need to intervene militarily to protect its interests. This marked a bold escalation in Japan's stance on the Taiwan issue, signaling readiness to support Taiwan against potential Chinese action. Takaichi's comments, delivered amid rising regional tensions, prompted an immediate and sharp rebuke from Beijing, highlighting the fragile balance in East Asia and the risk of broader confrontation. The remarks made by the Japanese leader on Taiwan constitute an interference in China's internal affairs and a serious violation of the One China principle and the basic norms governing international relations. Such words are extremely irresponsible and dangerous in nature and have caused very negative impact. Taiwan is an island of 23 million people, situated about 100 miles off China's southeast coast. China regards it as a breakaway province under the One China principle, insisting that other countries acknowledge this and avoid treating Taiwan as a sovereign state. Taiwan, however, maintains its own government, conducts elections, and runs an independent economy, a setup rooted in 1949 when China's civil war concluded with the defeated nationalist forces retreating to the island while the communists consolidated power on the mainland. This division has persisted without full-scale war, but mutual distrust has grown. China has intensified its military presence around Taiwan in recent years, viewing reunification as a national goal. For instance, in October this year, H-6K bombers from the People's Liberation Army Air Force conducted flights over the island, while June exercises involved over 70 aircraft, including J-16 fighters and unmanned drones, crossing the median line of the Taiwan Strait. Naval operations have featured Type 052D destroyers and Type 054A frigates patrolling the waters. Beijing frames these as defensive. Imran Khan supporters surround Adiala Jail. Pakistan government under pressure for Imran's release. Pakistan's Imran Khan saga at a tipping point. Debating tonight at 8 p.m. Co-powered by Century Ply Club Prime. रहो बेफिक्र। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। In the India Today Best Universities Survey, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School, Bengaluru. Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday. मुस्कुराए लड़खड़ाए जिंदगी चाहे जो भी हो। सर, पेशेंट के लिए कौन सा रूम प्रेफर करेंगे आप? जिंदगी भर के प्यार का कोई रेट कार्ड नहीं होता। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, विद यू लाइक फैमिली, विद यू ऑलवेज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा, धोखा नहीं देगा।
ऊपर नीचे भी नहीं होगा, सेफ रहेगा, सिक्योर्ड, मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। So in the past, we would see most of the terrorists who would get arrested, they would be like the people who would be working at a very low level. But today we have seen the white collar suspect. कश्मीर घाटी में डॉक्टर्स एक बहुत अल्टीमेट ड्रीम होता है वहां के लड़के लड़कियों का। उस बनने के बावजूद अगर आप रेडिकलाइज होकर अपने ही देशवासियों को मारने के लिए और अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की रेडिकलाइजेशन हो रही है और इस फ्रंट पे हम क्या काम कर रहे हैं। Investigators have identified Maulvi Irfan Wagha, also known as Imam Irfan, from Shopian in South Kashmir, as the mastermind who blended his dual identity, that of a preacher and healthcare worker, to influence and radicalize the educated youth. The accusation against him is completely